During Mr. Vajpayee's tenure, we assisted drafting the first national housing policy for India. And the target was to do housing for all. Housing for all means all sectors of the economy. So whether it is a rich person, middle class person, worker person, or a person who is today not having employment also needs to be taken care of. So the focus of NAREDCO along with the government was to create policies which would ultimately meet this objective. Over a period of years, we hold national convention every year where more than 1,000 people attend, and we try to debate what are the challenges for this objective to meet. We have found over a period of years solutions one by one that has taken place both in the private sector and the government sector. The government is responsible for creating an overall arching policy. It needs an enabling policy, and we need to do action on the ground in terms of implementation, construction and development, whether of townships or in terms of the development of those areas. If there were no challenges, then we don't need to say that housing for all is achieved. इसलिए कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए ये कन्वेंशन का महत्व बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि ये चैलेंजेस हम कैसे पूरा करते हैं ये हम कन्वेंशन में बातचीत जरूर करते हैं। तो इसलिए जो भी परिवर्तन आ रहा है पॉलिसीज के अंदर केंद्र सरकार की, जैसे एक जमाने में अर्बन लैंड सीलिंग थी तो उसको हमने स्क्रैप किया, लोगों को लोन नहीं मिलते थे, जो प्राइवेट पर्सन्स थे उनको बिजनेस के लिए लोन मिल जाते थे, लेकिन इंडिविजुअल को घर खरीदने के लिए नहीं मिलते। आज के तारीख में लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज इन रिटेल होम लोन्स। ये केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नारेडको ये सब पॉलिसीज में परिवर्तन कर दिया, इसलिए 8%, 7.5% रेट में आपको घर का लोन मिलता है, and that is the biggest benefit which is there for house purchaser. Number 2, केंद्र सरकार इंडिविजुअल लोगों को सेविंग के ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट देते हैं, लेकिन एक ही है जहां आपका खर्चा जो है वो उसका ब्याज जो है वो इंटरेस्ट आपके जो टैक्स कैलकुलेशन रहता है उसमें राहत देती है। तो ये केंद्र सरकार करती है। रिजर्व बैंक क्या किया कि उन्होंने मदद की कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लोन देती है तो वो कंटिन्यू करती है, ये बात रहती है। तो ये तीनों बात क्या है कि एक सहयोग बन रहा है कि जो हम ये सबको पूरा करना है। जो ग्रोथ है रियल एस्टेट में, जैसे हमने सब सुबह में बताया कि देश की प्रगति हो रही है वो 6.2-6.5% जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन रियल एस्टेट की ग्रोथ 24-25 में 10% थी, और हम अपेक्षा रख रही है कि इस साल में 15% जीडीपी ग्रोथ बना रियल एस्टेट का ग्रोथ होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, खाली खुशी नहीं है, कुछ गम भी है। गम क्या है कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग का क्षेत्र में मेरे 45 इयर्स के जीवित में रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम 15% अफोर्डेबल हाउसिंग का सेल कम हो गया। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली की और मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉर्टेड आउट। उसमें दो शुरुआत हुई है कि हम क्या मार्ग है। केंद्र सरकार ने PMAY 2 क्रिएट किया है, जहां अर्बन एरियाज में 1 करोड़ घर के ऊपर 1.5-2% इंटरेस्ट 20 साल के लिए राहत देगी। सेकेंड, रूरल एरियाज में 2 करोड़ घरों की देगी उसमें। लेकिन प्रॉब्लम अलग है, प्रॉब्लम है जमीनों के भार बहुत बढ़ गए हैं। दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, कोई भी बड़े शहर देखिए तो वहां रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, सर्कल रेट्स बढ़ रहे हैं, जंतरी रेट्स बढ़ रहे हैं, रेडी रेट बढ़ रहे हैं। उसके कारण जमीनों के बाहर बढ़ रहे हैं और वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार उसमें जुड़ के इसका मार्ग निकाल रहा है।
These are the three principal issues of कल, आज और कल. रियल एस्टेट में कल क्या हो रहा था, आज क्या है और आगे क्या करना चाहिए. As far as Delhi is concerned, I will leave it to Bansal Saab to brief you, because I am not as knowledgeable about the Delhi position, and he will be able to give you some ideas better. But this is the overall direction in which. One more thing which I must point out to you, and this is quite shocking, I'm sure, to all of you. Today, in real estate and infrastructure, we are 2 million workers short, 20 lakh workers, skilled workers short in India today. A company called L&T, the CEO, 3 months ago made a statement that they are 25,000 construction workers short today in the country. And on one side we have unemployment, on the other side we have no skilled workers. And this is going to grow because our requirement in 5 years, because of the growth of real estate and infrastructure, the gap will go to 5 million workers short, because skilled workers, I'm not talking about just ordinary workers, skilled workers short. And this is disaster, because neither the private sector nor the government sector has been able to fulfill, though the Prime Minister has been working on it. We as NAREDCO have had several schemes that are there. We have not been able to fulfill. I'm telling you deficiency of the industry also. Positive भी बोल रहा हूँ, negative भी है. और negative नहीं होता तो हमको बैठने की जरूरत ही नहीं होती थी. Then you can sit in your offices and give a report of the teji that is happening in the stock market. So the advantage is definitely there, that the future is going to be there, and we are going to solve it. And the Chief Minister made various statements in the morning relating to what she wants to do with real estate as far as Delhi is concerned, and that is a very positive matter that is going to be there. Thank you, Chairman sir. Mr. Hiranandani के बारे में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सब लोग हम जानते हैं. मैं काफ़ी पहले अराउंड 25-30 साल से जब भी बॉम्बे जाता था तो हाई राइज बिल्डिंगें देखता था हिरानंदानी सर की, और एक सपना रहता था कभी दिल्ली में ऐसा होगा कि हम भी इतनी ऊंची बिल्डिंगें बना पाएंगे. तो आज जब सब देख रहे हैं दिल्ली रिफॉर्मेशन के एज पर है, दिल्ली में हम हाई राइज बिल्डिंगें आने लगी हैं, और हाई राइज बिल्डिंगें ही किसी भी देश की तरक्की का एक रोल रहता है. जैसा सुबह भी आज डिस्कस हुआ कि आज जो हमारे पूरे कंट्री का जीडीपी है, जो कंट्री का पूरा जो 4 ट्रिलियन का हमारा बेस है, वो उतना हमारा खाली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट का होने वाला है 2047 में. 30 ट्रिलियन का 12%, 12.5% विल बी अराउंड 4 ट्रिलियन. तो जितना पूरा कंट्री का आज टोटल ग्रोथ है उतना जो है खाली रियल एस्टेट को होगा. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा काम आने वाले 20-22 साल में होने वाला है. जो भी आपके साथ आपके फैमिली के लोग जुड़े हैं, कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनको मोटिवेट कीजिए. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत काम आने वाला है, और हर सेक्टर में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, होटल, कॉलेज, स्कूल, वी नीड मेनी बिल्डिंग्स नाउ. दिल्ली में पर्टिकुलर आप देखिए, दिल्ली में काफ़ी सालों से कोई काम नहीं हो रहा था. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है, आप सब जानते हैं मास्टर प्लान आने वाला है. मास्टर प्लान के आने के बाद बहुत बड़ा काम कंट्री होम, 1 एकड़ में 3 घर आने वाले हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी आने वाली है, और सबसे बड़ा जो काम है रीडेवलपमेंट का होने वाला है. रीडेवलपमेंट ऑफ एंटायर दिल्ली, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है. NAREDCO एक ब्रिज की तरह काम करती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंडस्ट्री के लोगों के बीच में कैसे ब्रिज का काम करे. मैं काफ़ी दिनों से NAREDCO के साथ अभी जुड़ा हूँ, 2 साल से ज़्यादा मुझे हो गए हैं. अब मैं काफ़ी मिनिस्ट्री की मीटिंग में जाता हूँ. जब भी मैं जाता हूँ प्रेसिडेंट साहब के साथ और बाकी ऑफिशियल्स के साथ NAREDCO को बहुत सीरियसली सुना जाता है. NAREDCO से बहुत सारे सजेशंस इनवाइट किए जाते हैं जब भी कोई नई पॉलिसी आती है, बजट आता है, या जब भी कोई पॉलिसी आती है. तो NAREDCO इसका ब्रिज का काम जो कर रहा है आपकी सपोर्ट से कर सकता है. इसी सिलसिले में 17 जो कन्वेंशन हो रही है, इसमें हम एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट को क्या सजेशन दें, कैसे गवर्नमेंट के साथ हम अपने विचारों को रख पाएँ. आप सबका इसमें सहयोग रहेगा. आप सब अपने कंपनी में, अपने फैमिली में
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका अटेंड करने के लिए बोलिएगा। 29 एंड 30 अगस्त को ये होने वाला है। आज 1 अगस्त है, इसी महीने के एंड में ये प्रोग्राम होने वाला है। आप सब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें। थैंक यू। Thank you. See, I'm an engineer first and a technocrat first, then a developer later. So, मेरा जो एक फोकस है जी, मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक टाइम था जब हिंदुस्तान में 50, 100, 200 बिल्डर हुआ करते थे। आज ये संख्या मेरे ख्याल से 1 लाख तक पहुंच गई है, ज़्यादा ही होगी। मगर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि आफ्टर रेरा, builder is totally accountable for delivery of the project. What it entails is, he's taken land, he's taken the approvals, but the moment the construction starts, he is at the mercy of 20 different vendors and 20 different agencies who are responsible for a good quality or a bad quality job. At the level of the top developers and builders in this country, let's say like Hiranandani sir, 𝗙𝗪𝗪, 𝗂𝗽𝗱, there is no challenge. The challenge is at the level 2, level 3, as we say, tier 2 cities, tier 1, 3 cities. There it's a mess because the RERA laws are accountable same to DLF and Nirnajan sir, as they are accountable to a normal developer who's doing maybe a 6 or 8 story houses, that's it. But there is resources for him to handle that delivery is a larger issue, and this is where, if you look at our biggest obstacle in times to come is also going to be the delivery mechanism, the construction technology, the construction team, and some kind of adherence to the contract management, where we can say if I given a contract to X person, I'll be able to get a delivered project. So ये हमारे हो सकता है हमारे सिस्टम के अंदर ये अभी समझ नहीं है। अगर 2045-47 तक हमने जो पेरिस कन्वेंशन में साइन किया नेट जीरो के बारे में भी, जिसके बारे में बात करते हैं कि भाई इंडिया विल आल्सो बिकम नेट जीरो बाय दैट टाइम, unless you change the basic construction technology materials which are being used, that is not going to happen. I attended a seminar where somebody says, let's do net zero. I said, tell me how a builder can become net zero. We'll do that. So it's an opportunity for us to discuss that issue with the National Convention. It's a great roadmap for next 5 years, 10 years, 20 years. And in my opinion, will open such a great opportunity that it can be additional $500 billion up to a $1 trillion business. The Nirnajan sir knows the dollar terminology better than I think we do, but definitely the idea is to ensure that we also look at the delivery part of the entire discussion rather than only the policy part of the discussion, which is what our convention is all about. We cover end-to-end the entire sport. Thank you, Nirnajan sir. Thank you, Babu sir. Thank you, Bansal sir. Good afternoon to everyone. So Ali is having throat problem. He is unable to speak. So I will take the remaining things. Actually, we need a forum where to discuss all the matters in the convention. This is what we are doing in the last 25 years. And this is our 17th National Convention, 29th, 30th August 2025 at Hotel Ashok. Why the purpose of this convention? See, today when we are having the convention, we are getting from 20 states, 18 to 20 states, representations will coming to the one single platform. And also, Government of India said at least 10 to 12 IAS officers, secretary level people, and also ministers. To bring all these people, about 32 party IAS officers from different places, and also about 5 to 6 ministers into one forum, and the reactors, and the technocrat, and the technical people, and other allied industries also. Bringing all those people into one platform is our main goal to discuss various issues. The issues are like, one issue is with the central government. Central government, we have 3 issues mainly. That is civil aviation, and then Air Force Academy issues, then environmental issues, then NGT, of course, the environmental. These 3 comes under central government area, and each approval is taking its own time. And actually, technically at this 2025 level, we should not approach, every builder should not approach these organizations. These organizations can give a clear-cut roadmap and say, if you are constructing in this area, this is already every ELP is having the master plans. Once you have the master plan, the residential zone is earmarked and various zones are earmarked. The 3 institutions should come forward and say, this is the height you are allowed, this is the conditions for environment, they are the conditions for the Air Force Academy.
simple roadmap. You give a color code. Certain color codes should be different heights. Why should I go? See, I construct 40 floors building. Next to me, the other gentleman want to construct in 15 floors. 40 floors, I went to the permission for the civil aviation, etc. And same 15 floors, gentleman also has to go to the same thing. And he has to go and approach from bottom to top, and it will take 5 to 6 months to get clearances. We are now actually in modern era, and technology is available, software is available. Every building can be monitored by satellite images. Every day you can manage also. And such cases, why do we need this approvals taking long time? This is one important matter we want to discuss in our NAREDCO. So, luckily, we are getting the civil aviation minister also and civil aviation secretaries, and we want to discuss various matters. The thing is basically one-to-one, we may discuss 101 things. But in the public forum, they will also come forward with some solutions. This is one important thing with the national central government. Then coming to, these are the three problems keeping aside. We have the state problems. Variety of state problems. Each state is having its own fancy things. And to represent all those people, bring to the one dais and say, these are the policies okay, that Andhra Pradesh government is following. Today, I hail from the Telugu states and of course previously from Andhra Pradesh. And that is the one state today giving the very fast approval. Believe it, up to 5 floors, no permissions are required. It is only your architect has to submit along with the based on the GOs and says there is no deviation and they are following the source of GO and this is the thing, this is the way. Immediately fees payment will come. Pay the fees for all the fees, knowledge charges. Knowledge charges also you pay the same thing. Electrical charges you pay the same thing. Various local bodies, Gram Panchayat and ULP. So they want such a nice GO and online you can apply and within 15 days the payment mode will come and pay afterwards. If you deviate, that is the problem. So we are requested the Andhra Pradesh government do the policy, not the pre-approvals. Once the gentleman has taken the permission with a certain guidelines, see that the gentleman doesn't make any deviations. You monitor from the foundation time itself, because every building can be satellite image can be tagged and every building can be monitored sitting in the office. Whether it is deviating or not deviating, everything is possible now. So with that type of interaction, believe it that the new government has come just 1 year old. We met the Chief Minister 4 times. He has given about half an hour, 1 hour like time. And also we met our MUD Minister and secretaries every month basis in the last 1 year. And we got this type of approvals. I want the same thing to be implemented throughout India by all the states. Of course, all of you know Chandrababu Naidu vision is a little bit ahead than many people, and is a little bit of visionary, and he want to be friendly with our builders. Friendly means not monitored friendly; it is the friendly by the approvals. So we are bringing the MUD Minister of MUD Secretary from Andhra Pradesh is coming to our national convention. Also, the new city, Amaravati is coming there. So, there also CRD Commissioner, IAS officer is coming. They want to give their note, their approach. See that other government officials also know how the Andhra Pradesh is following, how Telangana is following. Luckily, in the Andhra Pradesh, we do Andhra Pradesh and Telangana in the 2 states where there is no FSA limit. All of you must be aware, there is no FSA at all. There are only setbacks. You go with the 20-meter setback all around, whatever the height you want to go, you can go, whatever the FSA you will get, you go there. 1:10. Can you believe it? 1:10 FSA is people are using nowadays. So, rises are almost 65 floors. 30 floors is become very common for today. 30 floors now, even first time electric people also started 30 floors building. Because technology has developed so well, and people are sitting in the office and giving, and things are moving, and GLL is coming for the forward for the quality control, and Tatas are coming for the quality control. They are doing all the job. So these are things also we want to discuss with our fraternity people. So what is going on in each state?
So what is the advantage in the each state is having, another disadvantage other states are having, and combine this one in one forum and say all the states should speed up their approvals. That is number one. Number two is our transparency. Of course, after RERA, our transparency levels are increased so good, and this is continuing. Non-RERA registrations, people also doing the business. Unfortunately, Delhi is having 3 crore population. Can you believe it? There are only 150 RERA registrations. My small town like Andhra Pradesh, small town like Tenali, having a population of 2.5 lakhs, having more than 300 registrations. Entire Andhra Pradesh is having more than 4,000 registrations. Maharashtra is having thousands and thousands of registrations. Opportunity, sir. यहाँ पे एक तो project ही allowed नहीं था, तो CM साहब करेंगे अब यहाँ पे 10,000. Reasons are 100. Reasons are 100. To overcome this problem only, we are talking in the various forums. Because we want to discuss all these problems. Why Delhi is backlog? Why only 150 registrations in almost 8 years? Very out of 120, 18 are belongs to 𝗙𝗪 sir. 18 registrations belongs to 𝗙𝗪 first. So he is taking almost like 15%, 10%. So this is the question. And in addition to this, our cities are not really livable position has gone. Our cities we are living, but the sound pollution, the traffic jams, and the air quality, all these things are also becoming matter. How to resolve all those things also? A technical team will participate and give a path. Okay, this is the way you have to go. Then only our cities can be sustainable. We are talking about sustainability from last 10-15 years. But what is the meaning of sustainability? Reducing the carbon dioxide in the atmosphere. Who has to do the job? Sitting in the place, are we are going to create whereas human beings, we take oxygen and we leave the CO2. That is natural. And while doing agriculture, we give the greenhouse gases. But fossil fuels are the major problem. Our entire production of electricity is produced mostly, it used to be 80% by coal. Luckily, now 55% level we have come. And by 2070, the net zero production of the net zero means actually 90% by alternative power, including nuclear power. Nuclear power, we have only 6,000 megawatts so far. Last 25 years, we didn't add much. But now, in this last budget, 100 gigawatts, Prime Minister is planning to go for nuclear power. So, nuclear power is the one substitute where for CO2 reduction will be maximum. Nuclear power, and if you compare with the solar power is gives per kilowatt 30 grams of CO2, whereas nuclear gives only 80. So that means compared to solar also nuclear power is lesser carbon. So these are the lot of technical things are coming to the, and we are talking about the green building and other things. Coming to our technology. Previously, in 15 years back, 20 years back, we used to visit China for seeing the buildings. What is the construction quality, what is the construction technology, what they are using. And I used to go out to China for 3-4 times, and I went to Singapore, I went to the Germany to see only what type of buildings, what are the things going on there. But today, in this time, those countries have to come to visit India and see our technologies. Our technologies are far good today. Wonderful way we are doing. Thanks to our builders, thanks to our technology supply, and today we can aram se construct 60-65 crores buildings just that we are constructing. And believe it, small areas in the non-urban areas also people are going for 25 crores. That is the technology we are going here. And but still furthermore technologies, 3D printing technology has come. 3D printing technology has developed in IIT Chennai. And recently, Pune, one 3D building is constructed in 2 months. And the advantage of the 3D building technology is also we are going to discuss in this forum. So we are going to discuss all these matters as in one place and for 2 days. And that is the place where our thinking, our future will be changing. So that is the reason I request
all people participate in our national convention, 17th national convention and 29th, 30th August. Please do come, participate, discuss, and if you have any questions, raise the questions. And there are many people to give the answers in any subject. So thank you for listening. Thank you. आपने कहा कि सर जो अफोर्डेबल हाउस है उसमें 50% की गिरावट, तो सर इसको बढ़ाने के लिए नारेडको संगठन के रूप में और सरकार क्या कर सकती है? दूसरा सर आपने कहा कि 20 लाख स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, तो वहाँ पे नारेडको या क्रेडा या गवर्नमेंट के लेवल पे क्या होना चाहिए? और एक क्लेरिफिकेशन है जो आपने कहा कि 5 मिलियन वर्कर्स स्किल कम है, तो कब तक मतलब ये फिगर पहुंचने का? पहली बात थी कि गिरावट जो है वो बहुत भयंकर बात है, क्योंकि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे तो हर मकान बनाने के लिए हमें जमीन की जरूरत होती है, और जमीन के जो भाव बढ़ गए हैं अर्बन एरियाज और उनके पेरिफेरल जो शहरों में है, उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। सेकेंड बात रहती है कि उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, दूसरे चार्जेस जो सरकार देती है, स्टैंप ड्यूटी लगाती है, जीएसटी लगाती है, ये सब कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे तो वो भी हो जाता है। मुंबई में ऐसे मकान हैं जहां 50% कॉस्ट, जितना मकान का जो मैं भाव में बेच रहा हूँ 50% सरकार ले जाती है। स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, डेवलपमेंट चार्ज, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन और वगैरह वगैरह जो चार्जेस हैं वो मिलके हैं तो लगभग 50% गवर्नमेंट ले जाती है। तो ऑटोमेटिकली जो अर्बन शहरों में भाव जमीनों के बढ़ गए हैं, उसके हम प्राइवेट सेक्टर में हम अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं कर पाते, क्योंकि नहीं कर सकते, और रेडी रेंट रेट या सर्कल रेट से कम भाव में बेचें तो इनकम टैक्स आपको पकड़ लेंगे, तो वो दोनों एक है। तीसरी बात रही कि 2023 में अक्टूबर के बाद प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो स्कीम था वो एग्जॉस्ट हो गया था, जो इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही थे, और अभी उसको वापस अभी लाया गया है और उसके रूल्स वगैरह अभी चालू हो गए। तो ये 2 साल के माध्यम में अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की 1.5-2% जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी वो नहीं थी, है ना, वो गैप हो गया, अभी फिर शुरुआत हो गई। तीसरी बात रही कि जो आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, वो ओरिजिनली होम लोन्स के 3 साल पहले हम 6.5% होम लोन्स पर देते थे, अगले साल हम 8.25% पर लेते थे। तो इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग में ईएमआई भरने में लोगों को कठिनाई थी। ये 3 मेन कारण है, जमीनों के भाव, इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ाना, सरकार के जो सर्कल रेट्स हैं और उनकी टैक्सेस हैं, ये कर दिया। तो ये मार्ग सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स नहीं कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती है, ये दोनों को मिलकर करना है। तो हम हमेशा सुझाव देते हैं, आरबीआई गवर्नर से बात हो गई है, अब सरकार से, केंद्र सरकार से बात हो गई है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से हम बात करिए। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग का क्षेत्र को हम कैसे मदद करें कि नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में इसको हम मार्ग निकाल के कैसे भी उसका आंसर लाए, हम सब मेहनत करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 रहा। सेकेंड पॉइंट आपकी थी कि हम स्किल वर्कर्स का क्यों शॉर्टेज है। 2 कारण है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बढ़ गया है, हर साल 10% से ज्यादा बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो है, नेशनल हाईवे 35 किलोमीटर बन गए हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रियल एस्टेट बन रहे हैं, रीडेवलपमेंट चल रहा है, हर देश हर शहर में बढ़ रहा है, और हमको सुथार नहीं मिलते हैं, पेंटर नहीं मिलते हैं, बारबेंडर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो इसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी करना है। जैसे लार्सन एंड टुब्रो एक कंपनी है, उनके पास 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, लेकिन उनको भी 25,000 वर्कर शॉर्ट है। हमारे खुद के कंपनी में 500 वर्कर शॉर्ट है स्किल में। तो ये देखा जाए तो ये एक प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई किया है। जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका सोल्यूशन निकलता है। जब तक हम आइडेंटिफाई और आपको बताएंगे नहीं और आप पब्लिश नहीं करेंगे और सरकार इसकी मायने नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए हम इसको फ्लैग ऑफ करते हैं कि हमको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है।
आज बात हुई थी, मुख्यमंत्री दिल्ली में बताया कि हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर नरेडको के साथ शुरुआत करने को तैयार हैं। उन्होंने ऐलान किया और लेबर मिनिस्टर भी सामने थे, उन्होंने कहा कि हम साथ में इसका कुछ मार्ग निकालेंगे कि दिल्ली और वगैरह को कर लेंगे। हमारे देश में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे देश में। तो जब रियल एस्टेट बढ़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो नौकरी भी बढ़ जाती है। तो मेरे अंदाज से 5 साल में जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, पैसे तो बढ़ जाएंगे, लोगों अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन नौकरियां मिलनी चाहिए। इसलिए हम इसके ऊपर गौर करते हैं कि अब हर एक को नौकरी मिलके उनकी हर एक जो लोएस्ट स्ट्रैटा है उनको कैसे हम बढ़ोतरी दें जो हम चाहते हैं। तो ये दोनों बात हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा, इंडस्ट्री की जो शॉर्टेज है स्किल डेवलपमेंट में वो भी हम आंसर करेंगे इससे। What are the major issues related with the NAREDCO in Delhi? Sorry? What are the major issues related with the NAREDCO in Delhi? I think if you, we have a whole list of it which Mr. Bansal will tell you. The issue is very simple. Delhi's leadership was taken away by Gurgaon, Noida and Greater Noida. What were the reasons for it? Mr. Bansal will share with you in greater detail. The point is not that. India is a large country and federal. You have different states which will proceed at different times. Our president just mentioned that the concept of FSI has been removed completely from Andhra Pradesh and Telangana. Now this is a policy move that has taken place in order to solve the issue of the cost of land and other issues. So how do we solve various problems in various things? So lots of solutions are now asked for by the government for the purposes of solving the problems of Delhi. They were mentioned in the morning. Mr. Bansal will again reiterate them just now. But I will take your leave. Thank you very much. Look forward to see you in the national convention. Thank you.